नाउ लेट्स सी अनदर सिंपल टेक्निक. रैंडम इनपुट टेक्निक एक होता है. रैंडम इनपुट में क्या होता है, आप रैंडम इनपुट लगाते हैं. यू यूज अ डिक्शनरी, you use a list of nouns to get to a random input. It's a very powerful and seemingly illogical technique. Brain is very good at making connections, even if random word seems remote. And you cannot really choose a random entry point because it would be chosen according to existing patterns. तो रैंडम इनपुट में क्या करते हैं, एक रैंडम वर्ड लगा देते हैं. कंपाइल अ लिस्ट ऑफ 60 नाउन वर्ड्स मे बी. और तो हम क्या करेंगे, जैसे आपके पास एक 60 नाउन की लिस्ट है, सिंपल नाउन्स. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं: नोज, आइज, फायर, गोट, आई डोंट नो, माउंटेन, प्लेन, और एनी सच लिस्ट ऑफ नाउन्स. तो आपने क्या किया, किसी भी रैंडम टाइम पे व्हेन यू वांट टू प्रैक्टिस दिस टेक्निक, रैंडम इनपुट टेक्निक, आपने वॉच पे देखा और वॉच पे यू सॉ द नंबर ऑफ सेकंड्स. लेट्स से 40 सेकंड्स हैव पास्ड और 60 सेकंड्स हैव पास्ड और 10 सेकंड्स हैव पास्ड, एंड यू पिक दैट नंबर, एंड यू पिक दैट वर्ड, 10th number word from your list, or you pick it like, stabbing a finger on the newspaper, or you can pick the nearest one. बहुत सारे random तरीके से you can get this random word, and then you attach it to your idea, like office copier को knows. तो किसी ने क्या किया, ऑफिस कॉपियर के रिलेटेड ही वांटेड आइडियाज, राइट. ऑफिस, जैसे ऑफिस कॉपियर्स होते हैं हमें पता, ऑल इन वन प्रिंटर्स होते हैं, राइट, स्कैन, कॉपी, फैक्स एंड ऑल दैट. तो उस पे किसी ने नोज का आइडिया लगा करके सोचा, तो दे इन्वेंटेड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज स्मेल्स फॉर प्रिंटर, कि जब वो जल जाएगा तो अलग स्मेल आएगा, जब वो उसका इंक खत्म हो जाएगा तो अलग स्मेल आएगा, जब वो जैम हो जाएगा पेपर ट्रे तो अलग स्मेल आएगा. तो स्मेल से पता चलेगा क्या हुआ है. जैसे ऑफिस में 100 लोग हैं और स्मेल आ रहा है अलग सा कोई प्रिंटिंग मशीन से, तो स्मेल से पता चल रहा है आपको कि क्या हुआ है, कि या तो प्रिंटर जैम हुआ है, या वायर जल गई है, या क्या हुआ. स्मेल इज टेलिंग यू. सो दिस इज वन आइडिया थॉट अबाउट एंड कॉन्सेप्टेड फॉर बाय अप्लाइंग दिस टेक्निक, बाय पुटिंग नोज along with copier. ठीक है. So I'm just sharing you examples how these techniques, seemingly appearing to be so simple, are very powerful. Then you can change the random words. तो अभी कुछ हमने टेक्निक्स देख लिए. Now we'll quickly wrap up with the applications of creative thinking. I think we have covered most of the syllabus. It's just how this can be applied. There are a couple of slides only. I think we can just, so this is going to be more like a summary, or more like a culture, how we can keep it as a part of our lives, how we can become creative thinkers, how we can use it in our day-to-day lives. तो एप्लीकेशंस में क्या क्या होता है, जनरल होता है, स्पेसिफिक यूज होता है. यू कैन यूज इट फॉर अ जनरल फोकस एज वी सॉ, और यू कैन स्पेसिफिकली अप्लाई इट टू जनरेट अ सेट ऑफ आइडियाज इन समथिंग. यू कैन अप्लाई इट इन बोथ द सिनेरियोस, एनी ऑफ दीस टेक्निक्स. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट क्या होता है कि जब कोई आइडिया आता है तो इट कुड बी हाफ बेक्ड. ठीक है, इट कुड बी, कोई बोलेगा कि आई वांट फ्लाइंग कार्स, राइट. तो कोई दूसरा बोलेगा कि अरे ये तो इलन मस्क ऑलरेडी कर रहे हैं, right? ये तो टेस्ला ऑलरेडी बना रहा है, राइट. होता है ना. तो बहुत सारे आइडियाज इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं कि कोई बोलता है कि इट इज द सेम एज समथिंग. ठीक है. सो द सेम एज इज द मोस्ट पावरफुल आइडिया किलर. वी नीड टू अवॉइड दिस बिकॉज योर आइडिया कुड स्टिल बी डिफरेंट, राइट. यू कुड बी फ्लाइंग कार इन विद अ हॉट एयर बलून मे बी, नॉट लाइक इलन मस्क इज फ्लाइंग. योर आइडिया कुड बी डिफरेंट, राइट. तो जनरली क्या होता है, जब भी आइडियाज आते हैं तो हम उनको, हमें सेम, थोड़ा सा भी सेम लगता है ना, अगर 1% भी सेम लगता है किसी और आइडिया से या एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट से, तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ अवर डेलिबरेट हैबिट ऑफ नॉट थिंकिंग क्रिएटिवली. तो दिस इज एन आइडिया किलर, वी हैव टू कीप इन माइंड. इट्स अ कैवियट, यू हैव टू अवॉइड दिस, राइट. तो ट्रीटमेंट क्या करता है, ट्रीटमेंट आइडिया को शेप करता है, टेलर करता है. सो इट्स अ ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट हाफ और इवन सीमिंगली इलॉजिकल और इम्पॉसिबल आइडियाज शुड आल्सो गो थ्रू. आपने क्रिएटिव सेशन लिया, आपने कोई समझो, कोई यही आप में से कोई पिक करेगा टास्क कि भाई ये मैं इस पे काम कर रहा हूँ, चलो मैं क्रिएटिव टाइम देता हूँ. तो और आपने 10 मिनट लेकर के कोई टेक्निक उस पे थॉट प्रोसेस दिया, डेलिबरेट, एंड यू गॉट 5 to 6 आइडियाज, लेट्स से फॉर एग्जांपल. तो कुछ आइडियाज ऐसे होंगे जो आप इमीडिएटली उसमें से छोड़ देंगे, और कुछ आइडियाज ऐसे होंगे जो आपको लगेगा इस पे काम करना चाहिए. तो जो आप छोड़ देंगे आइडियाज, उस आइडियाज पे भी काम होना चाहिए. यू, हाउ यू ट्रीट दोज आइडियाज, सम आइडियाज यू कैन शेप, सम आइडियाज यू कैन टेलर, स्ट्रेंथन, रीइंफोर्स, own the ideas, compare the ideas with others, identifying defects, thinking consequences, and testability. So there are so many things you can use to polish your ideas. ठीक है. दिस इज ऑफन इग्नोर्ड पार्ट ऑफ द क्रिएटिव वर्ल्ड. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन में क्या होता है कि इवैल्यूएशन ट्रीटमेंट के बाद आता है. तो पहले हाफ बेक्ड आइडियाज को जो भी है उनको आपने ट्रीट कर लिया, यू कंप्लीटेड द प्रोसेस. नाउ व्हेन योर कंप्लीट आइडियाज, दे विल बेसिकली कंटेंट फॉर द F1 रेस और द फाइनल रेस. इवैल्यूएशन मतलब इट विल बी इवैल्यूएटेड अगेंस्ट बिजनेस. नाउ कि आपने बोला कि हम, जैसे टाटा वांटेड टू क्रिएट अ नैनो, राइट, टाटा वांटेड टू क्रिएट अ स्मॉल कार. So his people may have generated hundreds of ideas, isn't it? But what was implemented? Only one idea, right? Why? Because a lot of ideas will be lost at the treatment level. A lot of ideas will be lost at the evaluation level. इवैल्यूएशन में हम मार्केट चेक करते हैं कि बेनिफिट्स क्या है, एक्चुअली फिजिबिलिटी है कि नहीं, रिसोर्सेज है कि नहीं हमारे पास, और फिटमेंट है कि नहीं. तो इवैल्यूएशन का पार्ट उसमें आता है बहुत सारा. ठीक है. एंड देन इन इवैल्यूएशन और क्या क्या होता है, यू कैन इवन थिंक ऑफ इट और कैटेगराइज इट एज
directly usable idea, or good idea but not for us, or a back burner, right? It can stay in the back and then you revisit it again next year. Needs more work. Powerful but unstable. Interesting but unstable. Weak value. Unworkable, right? So this tells us you can categorize these ideas. Then you can look for vital factors, fatal factors. Fatal factors are often one of the factor that will वो पूरा डुबा देगा आपके implementation plan for idea को. There are some fatal factors like cost, for example. कोई बोलेगा मुझे spaceship बनाना है, but spaceship you need billions of dollars maybe. So for some ideas cost is too much. For some ideas practicality is too much. So you immediately that could be one fatal factor or vital factor. Okay, so this is evaluation. Now we see the culture. Culture क्या होता है? As I briefly talked about this already. Culture is having everyday creativity. You develop your mindset of creativity. You apply it day to day processes. You don't wait for an idea to flash a bulb in your brain. You don't wait for that time, but you learn these techniques and deliberately you generate ideas, or you try to be creative with the help of this. Some of the ways we can achieve this is you can in the company we can introduce it as a culture. We can talk this language. We can help each other day to day whenever we are solving problems. We can use these ideas, use these techniques. So there is everyday creativity, there is specific creativity. You are being specific, you are using specific technique, uska focus defined hai aur hum log us pe will work together on that. And then everyday creativity, as I said, it is more like a passion, a habit that you develop. Then there is provocation. We read, we understood what is provocation. Listening and sensitization are two another techniques, which we didn't cover in detail, but they are very powerful. Then training. Training is essential part. Like this session, we need to do more training sessions for this to introduce it. And there could be other volunteers. There could be programs and structures. Big companies define a lot of creative programs and concepts. Then there is something called as creative hit list. Creative hit list is also introduced by Mr. Edward DeBono. He has created this concept or this name so that there is a creative hit list being circulated in the company, either circulated through mail or you can have it on your intranet or HRIMS or system. You can have it in a central website जहाँ पे creative hit list होगी और उसमें ये topics होते हैं problems, current problems that we are dealing with, current improvements that we want to do, what are the projects and what are the opportunities. और इसके नीचे each of these headings will have points. और इन पॉइंट्स पे कोई भी सोच सकता है, इन पॉइंट्स पे कोई भी आइडियाज दे सकता है, इन पॉइंट्स पे कोई भी इन पॉइंट्स पे वीकली मीटिंग्स हो सकते हैं. सो दिस कुड बी वन वे. सो दिस इज समथिंग लाइक अ क्रिएटिव हिट लिस्ट कॉन्सेप्ट. देन देयर शुड बी a nominated champion to make it a culture, and there should be someone nominated, like I am taking this initiative for this, someone else can take initiative for something else for this. Then it is a part of quality and it is a part of continuous improvement, and it always helps with the cost cutting. Cost cutting is one key area जहाँ पे लोग क्रिएटिव टेक्निक्स की शरण में जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट इज, आपको पता है, कॉस्ट इज एसेंशियल or fatal. More cost is fatal to business, or improper cost or wastage is fatal to any company or business. So cost cutting is one key area where everyone uses creativity or want to use creativity. Quality or continuous improvement is another. So I think that's it.